Dear friends, we all know that in our lifespan, in our lifetime, at different phases of our life, we have to take decisions. Right or wrong, that we don't know, but we have to take decisions. There is an age where our decisions are taken by somebody else, whether parents, whether our guardian, whether elder brother, or whoever. But at some age, the life asks you to take a decision on your own. And that age onwards, a person need to take a decision by his own means, with consultation, whether he likes it or not, but he has to take a decision. Some people are very afraid of taking a decision, and that's why they take a shelter later on. मैंने डिसीजन इसके कहने पे लिया, इसने मुझे ऐसा कहा था इसलिए मैंने ऐसे किया. But ultimately, he decided based on anyone's advice, he should never take a shelter like this. If he believes in someone, if that someone gave him the right advice based on the facts available at that time, then that advice was not wrong. It is the one who you believed in him, and based on that belief, you took a call and you took a decision and implemented it. Maybe that decision was wrong or right, that only time can tell you. Like you blame others for your decisions, you never appreciate others for the decision. कि ये मैंने उसके कहने पर लिया था, आज मुझे बहुत फ़ायदा हो गया, मैं बहुत खुश हूँ उसके कहने पर, ये कभी नहीं कहते. इट्स ए ह्यूमन नेचर कि वी ट्राई टू टेक द क्रेडिट, सेल्फ क्रेडिट फॉर आवर डिसीजंस इफ इट इज़ राइट, रादर we blame others for our wrong decisions. In the same nature, do you realize these decisions of yours can make or break somebody else's life? Hence, do not become an advisor or salahkar, where it's very easy to give an advisory, salahkari, which can confuse other person, and rather in that confusion, a person unnecessarily feel a pressure of what should I do, where I have options of A, B and C and all looks very nice. What should I do? One important aspect which I would like to mention here is, please take decisions only which are within your means. If the effect of that decision can take you beyond your means, abstain from such decisions because this can ruin your life. आज आप सट्टा खेलते हैं, सट्टा खेलना एक डिसीजन है, स्पेकुलेशन, पर अगर आपने सट्टा इतना ज़्यादा खेल लिया कि आपकी पूरी संपत्ति ही उस पर दाव पे लग गई, तो पहली बात तो सट्टा खेलना ही गलत है, बिकॉज यू आर ए कर्म योगी, यू शुड नॉट डिपेंड ऑन अ फास्ट अर्न मनी. और अगर आप सट्टा खेलने के लिए किसी वजह से तत्प्रेरित हो गए थे, तो भी आपको सट्टा उतना ही खेलना चाहिए जितना आपकी अपनी कैपिटल है, नॉट बियॉन्ड द बोरोड फंड्स. हेंस योर डिसीजन मेकिंग शुड बी एप्रोप्रिएट, टाइमली, द इफेक्ट ऑफ विच इज़ विद इन योर मीन्स एंड विच इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू. आपको अपने बच्चे को इंडिया से बाहर पढ़ाना है, आप पढ़ाना चाहते हैं बिकॉज वो बहुत काबिल है, पर अगर आपके पास मीन्स नहीं है और मीन्स लेके आपने लोन लेके उसको पढ़ने के लिए बाहर भेजा, तो आपको 2 बार सोचना चाहिए. इसलिए नहीं कि उसको पढ़ने की इच्छा नहीं है या वो पढ़ने के काबिल नहीं है, लेकिन क्या उसकी काबिलियत के बावजूद भी आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं. और उसके बाद में अगर उसमें काबिल है तो आई एम श्योर यू कैन फाइंड वेरियस वेज एंड मीन्स टू गेट हिम द एजुकेशन विद इंडिया और इवन अब्रॉड. यू विल बी सरप्राइज्ड, the brightest of the brightest students are from the government schools, not from the public schools. So, education is based on the faculty and the student and the capability overall around, not based on only institution. Yes, institution does help, but the decision making should not be only on the one factor only. किसी से रेस करते हुए डिसीजन न लें कभी, कि किसी ने कार बड़ी ली है तो मुझे बड़ी लेकर उसको दिखाना है.
ये सब चीज़ें आपके डिसीजन में भागीदार है, अफेक्ट करती हैं, आपके लाइफस्टाइल को अफेक्ट करती हैं, आपके हैप्पीनेस को अफेक्ट करती हैं। Hence, friends, my simple suggestion is, do not get afraid to take a decision. Take a decision, right or wrong, but at the time when it is needed, do not delay in taking the decisions. And when it is proven that you have taken a right or wrong decision, never blame others, because you have heard others, but then you have taken a call yourself. I'm sure this will make you very happy in the entire life, where you will live for your own decisions. And when a person does it, 99% decisions are always right.